So let's start with the analog electronics part. All these parts we have done. Now we are starting with the op amp. op amp is operational amplifier. ओके, तो इस पे बेस्ड हमारे पास पेपर में फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं. दैट आई टेल यू. फर्स्ट आई नीड टू टेल यू व्हाट इज op amp basically. See, what is op amp? Op amp is basically the operational amplifier. Op amp is operational amplifier, एंड इसमें हमारे पास सिंबल ऑफ op amp इज लाइक दिस. लाइक सपोज यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है एंड यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है. दिस वन इज द इनपुट. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट होती है. दिस इनपुट इज नोन एज द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड दिस इनपुट इज नोन एज द इन्वर्टिंग इनपुट. क्यों बोलते हैं इसे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, दैट ऑल्सो आई टेल यू. And we'll provide the supply. Here the supply is plus VCC and here the supply is minus VEE, and output will be denoted by output voltage, that is V naught. Sorry. Clear? After that we'll have different types of op amp. What are the different types of op amp? सबसे पहले we'll have inverting amplifier. Sorry. What do you mean by the inverting amplifier? Inverting amplifier का क्या मतलब होता है? Like suppose we are providing the input voltage like this. This one is positive and this one is negative. तो output में will get the output in the amplified form. हमारे पास जो output आएगी वो कौन सी form में आती है? Amplified form में आती है. And output will be inverting. Inverting means कि वो उससे oppose हो जाएगी. जैसे जैसे सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा? पहले उससे अपोजिट हो जाएगी. पहले नेगेटिव हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी? हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है. सो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. और तुमने देखा होगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड है और जो इसका एम्पलीट्यूड है, दोनों में डिफरेंस है. एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट इज लेस बट द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म इज मोर, राइट? तो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इट एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इन आउटपुट क्या हो जाएगी? इन्वर्ट हो जाएगी. हमने पहले यहाँ पॉजिटिव दिया है बट यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है. अगर मैं हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे. मतलब इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा. गॉट इट? दिस इज नोन एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखो किस तरह से बनता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का. This is negative, positive. Positive terminal will be grounded and input voltage will be connected to the negative terminal. Negative मतलब inverting. तो हमें voltage कहाँ पे देनी है? Negative पे. That's how it will work as a inverting amplifier. तो voltage हम कहाँ पे provide करेंगे? Negative terminal पे. This one is the voltage V in. Other side of the voltage is grounded. और फीडबैक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट होता है. फीडबैक रेजिस्टेंस हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे ही कनेक्ट होता है. दिस इज R1, दिस इज RF एंड आउटपुट वोल्टेज इज डिनोटेड बाय V नॉट. अब नाउ इसमें ये sometime they'll ask you the derivation of the inverting amplifier, so I'm telling you the derivation. Okay, this is the point. This is the basically node. We can consider it as a node. Okay, so potential here would be VA, right? तो अकॉर्डिंग टू द ओपैम्प हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है. V नेगेटिव इज इक्वल्स टू V पॉजिटिव एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड. चाहे वो कोई भी ओपैम्प हो, एनी ओपैम्प विल बी देयर, दिस रूल इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी ओपैम्प, that V negative must be equals to V positive. Got it? Now here the current flowing would be I1 and here the current flowing suppose would be IF. IF is for the feedback current. op amp के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता. तो if I'll apply the KCL over here at node A, तो we can say that I1 is equals to IF.
ठीक है। अब I1 कैसे जा रहा है, इफ यू रिमेंबर द नोडल एनालिसिस, I1 विच नोड टू विच नोड, V इन से VA जा रहा है, तो दैट वुड बी V इन माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली IF कैसे जा रहा है, VA से V नोट जा रहा है, तो VA माइनस V नोट डिवाइडेड बाय RF, राइट। So now you need to calculate V naught output voltage, इसके अकॉर्डिंग बतानी है। And now you can see the voltage across positive terminal is 0, तो voltage across negative terminal is also 0, because according to the concept of virtual ground, तो that means कि VA की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो substitute all of the value and tell me V naught की क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ से, V in। This is the formula for the inverting amplifier that you need to remember for the numerical purpose. Okay. Another type of op amp is non-inverting amplifier. कभी कभार इसकी derivation पूछ लेते हैं, तो you need to do this non-inverting amplifier। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज इट्स नेम सजेस्ट कि इन्वर्ट नहीं हो रहा। So if you are providing the input waveform like this, then you will get output waveform like this। पहले तुमने positive terminal provide करी है, then also you will get in the output positive only, means your output is not inverting, right? There is a change in the amplitude, but there is no change in the phase. So for that, there is a particular circuit that you need to remember: positive, negative. Now here it is the case of non-inverting, so you need to provide voltage to the non-inverting, means positive पे। यहाँ पे देखो voltage तुमने negative पे provide करी है, that's why you are getting the negative sign in the output। okay, यहाँ पे हम voltage provide करेंगे positive पे, then we'll get the output in the positive form। ठीक है। Again V in another terminal would be grounded। feedback पे हमेशा नेगेटिव पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, फीडबैक रेजिस्टेंस, एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R1। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डायग्राम, यू कांट चेंज द डायग्राम। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, विल हैव IF फीडबैक करंट, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, I1, राइट। तो अब यहाँ पे इस नोड पे, like here voltage would be V positive, here voltage would be V negative, and as you know voltage across positive terminal would be equals to the voltage across negative terminal। तो voltage at positive और V in same है, because there is no resistance over here, तो V positive would be equals to V in, and V negative would be equals to, let us consider this point would be VA, तो VA। ठीक है। Now again apply KCL, तो I1 is equals to IF। I1 कैसे जा रहा है, tell me। So this is the output voltage 1 plus RF by R1 V in, okay, that you need to remember। Next one is the voltage follower। voltage follower में input would be exactly equal to the output। in this we don't use any resistance, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव से मतलब आउटपुट से इनपुट कनेक्ट है, बट विदाउट फीडबैक, ओके, विदाउट रेजिस्टेंस। ये V in है और यहाँ पे आउटपुट कितनी आएगी, V नॉट। सो वी कैन से दैट V नॉट इज इक्वल्स टू V in। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज द समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या होगा, ग्राउंडेड। अगेन नेगेटिव पे फीडबैक रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, RF। तो देयर मस्ट बी मोर देन वन, तभी तो ऐड होगा। समिंग एम्पलीफायर बोल लो या फिर एडर बोल लो, बोथ हैव द सेम थिंग्स। सो विल हैव, let us consider two resistance RA, RB, and here the voltage would be VA and VB। another side of VA would be grounded, similarly another side of VB would be grounded। here the current is IA, and here the current would be IB, and here the current would be IF,
Okay. Now again, if I'll consider VA over here, so I'll apply KCL. So IA plus IB must be equals to IF. ठीक है. IA कैसे होगा, IA IB क्या होगा एंड IF क्या होगा, दैट यू आर गोइंग टू टेल मी. बट ये देखना कि VA इज इक्वल्स टू V नेगेटिव एंड V नेगेटिव इज इक्वल्स टू V पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड, सो अल्टीमेटली VA इज इक्वल्स टू 0. Got it? Next one is the difference amplifier. Difference amplifier में draw the diagram. Diagram you need to remember because हर case का अलग diagram है. Okay. This is suppose V2. This is suppose V1. This is R1. This is R2. This is feedback resistance RF. This is R3. This would be grounded. तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज वुड बी इक्वल्स टू वी नॉट इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, दैट यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज दे डिडंट मेंशन इन योर हैंडबुक. ओके. V1 into R3 divided by R1 plus R3, 1 plus RF by R2 minus V2 into RF by R2. Write down the formula. अब ये दो और बचे हैं बस लास्ट, एक इंटीग्रेटर एक एज अ डिफरेंशिएटर. बट इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी नीड टू यूज कैपेसिटर. ठीक है. लाइक इनपुट इज द रेजिस्टेंस एंड फीडबैक में यहाँ पे रेजिस्टेंस को ना कनेक्ट करके क्या कनेक्ट करते हैं, विल कनेक्ट विद द कैपेसिटर. ओके. तो यहाँ पे इनपुट विद द रेजिस्टेंस, हियर वोल्टेज इज V in, आउटपुट वोल्टेज इज V नॉट, हेयर इट्स द कैपेसिटर. तो यहाँ पे ये क्या है I in और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा I नॉट. तो वी कैन से दैट I in इज इक्वल्स टू I नॉट, राइट. तो V नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय RC इंटीग्रेशन 0 टू T V in dt. इसकी डेरिवेशन एक बार खुद ट्राई करके देखना, हो जाएगी, नहीं होगी तो मैं बता दूंगी. ठीक है. Similarly, we'll have the differentiator. What is the difference between integrator and differentiator? इसमें हम इनपुट में कैपेसिटर देते हैं, वहां पे देखो हमने फीडबैक में कैपेसिटर दिया है, राइट. बट हेयर विल नीड टू गिव इनपुट एज अ कैपेसिटर and feedback may will provide the resistance. So this would be output voltage V naught, input voltage again V in, capacitor C R, and positive terminal would be grounded. Okay. Negative, positive, so V naught would be equals to minus RC dV in by dt. ये डिफरेंशिएटर है तो इनपुट वोल्टेज वुड बी डिफरेंशिएटेड, एंड वो इंटीग्रेटर है तो इनपुट वोल्टेज वुड बी इंटीग्रेटेड. ठीक है.